lives in a way that can, little by little, bring us to the end of all dukkha. So the teachings encourage us to reflect on our lives, on our very human existence. Birth is dukkha, aging is dukkha, death is dukkha, sorrow, lamentation, pain, grief and despair are dukkha. Being with what we don't like is dukkha. Being separated from what we do like is dukkha. Not getting what we want, not having things the way we would like them to be. Or when they are the way we like them to be, the fact that they change. As long as we look for some kind of refuge in the world of conditions, there's always going to be a sense of disappointment. And it's this sense of disappointment, this endless seeking, that the Buddha is addressing with his teachings. Recognizing that in this world of samsara, we talk about the world of samsara, endless wandering. This is where beings were trapped, caught into this constant search for some kind of inner stability, some kind of peace, some kind of permanent state of well-being. And the Buddha's teaching tells us that this simply is not possible. Sometimes we can see this in a very negative way. The whole of life is suffering, is miserable. And that's an unfortunate way to see it, because there are plenty of things in our lives that are very pleasurable, that we can enjoy. But the mistake that we make is expecting them to last. That's where we go wrong. So we can enjoy being with conditions that we find pleasurable. We can enjoy being with people that we love, that we care about. We can enjoy the times that we're feeling healthy and strong. The mind is bright. Sense of success and happiness. We can enjoy those things. The Buddha is not saying that we shouldn't enjoy them, but that we shouldn't rely on them, we shouldn't depend on them as a lasting, safe, abiding. They're fleeting, they arise and they cease, they come and they go. The wonderful moments arise and the wonderful moments cease. Similarly, miserable, difficult states also arise and cease. So the Buddha's teaching is very much acknowledging how things are, spelling it out for us,
so that we can really, really understand and stop seeking permanent satisfaction through sensuality, through some kind of sense of becoming, feelings of success and being good at things, desire for annihilation. Any kind of desire, if we attach to it, leads us to struggle because we can't rely on them. We can't rely on what we achieve, what we attain. And the Buddha then analyzes it even further. The 5 focuses of identity. These aspects of what we call me. The body, the mind, and the different aspects of mind. Feeling, perception, mental formations and sense consciousness. If we cling to, if we attach to, if we identify with these, then they'll surely lead us into some kind of struggle. None of them is fixed and solid and lasting. This word anicca. Nicca means solid, permanent. Anicca means not solid, not fixed, not permanent. Fluid, fleeting, changing, flowing. We tend to identify with these things. We tend to try to see them as being something solid, something fixed. We tend to imagine that we're going to continue forever. We need to really make an effort to imagine not being here before we were born, and not being here after we die. It's difficult for us to have a sense of this, because for most of us, we are the center of the universe. We are the fixed point in the universe, me, from which we view the world, from which we view all the other beings on the planet. All the other objects, things, animals, plants, and so on. But the Buddha encourages us to recognize that this is not a satisfactory position to adopt, to maintain. Because like everything else, this phenomenon is continuously changing. The body is changing, the mind is changing. All the aspects of the mind are changing. Furthermore, the encouragement is to investigate and to see that they're not a self. None of them. The body is not a self.
feeling is not a self. Perception, mental formations, sense consciousness are not who and what we really are. This is a teaching that we may hear and we may appreciate intellectually. This is how we start. We appreciate it intellectually, and sometimes it takes a bit of a stretch to even understand what it means. And then you'll notice in the chanting it says, for the complete understanding of this, the Blessed One in his lifetime frequently instructed his disciples in just this way. So over and over and over and over again, he reminded them, the body and mind are not permanent, they're not fixed, they're anicca. Neither are they a self, they're anatta. There's no self in any of it. Because from an intellectual understanding, it needs to go deeper. It needs to become part of the way that we view things, the way that we see things, the way that we contemplate our lives. So during this time of retreat, there may be moments of insight. You think, oh yes, of course, I see, I get it. I really get it. And then we may forget. We may fall back into our habitual reactions and patterns of thinking. And this is completely normal. We're learning a new skill, a new way of appreciating our life, our existence. And it takes time and repetition. So please don't feel discouraged if you find yourself stuck into the same old pattern of thinking, the same old suffering. Don't feel discouraged. Just simply say, okay, let's have another look at this. Let's look more closely. Liberation is a gradual process. The Buddha likened it to like the shore at the ocean, and it slopes gradually. And in the same way, our understanding changes gradually. I think I may have already mentioned, like the beginning of the day. It's dark one moment, and then half an hour later, it's getting light, and half an hour later, it's bright light, sunlight. And yet we don't actually really notice that it's changing unless we observe very, very closely. And in the same way, our understanding changes gradually, little by little. It may be that looking back after 2 or 3 years of practice, we see that actually, yes, I don't get so angry, I don't get so upset, I feel more peaceful and happy. But if we're looking for change every day, we may be disappointed. We think, oh, why doesn't it hurry up? Why can't I stop suffering? We think, how can I make it grow faster? And just takes time, and it takes suitable conditions, lots of encouragement, regular practice of meditation, living carefully, responsibly, coming retreat from time to time. And these are all things that can support and nourish our practice. And the understanding grows as it will. And for some people it grows faster, and for some people it grows slower.
But the important person in this is ourselves, each one. For each one of us just to be concerned about creating the right conditions and allowing the plant to grow towards the light. So this chanting, these reflections, we repeat every day, or at least very, very frequently, because they're part of what nourishes our understanding. Some people think, oh, chanting, a waste of time. Why bother? But personally, I find doing this regularly and little by little it becomes part of our way of seeing things. And when we learn it off by heart, we can bring it to mind during the day. So a very, very valuable resource. And for now we can just sit quietly for a short while, and just contemplating, turning these things over in our minds. Remember that if you're feeling a bit sleepy, there is the option of opening the eyes. The option of putting effort into sitting up nice and straight. And even if you're really sleepy, then to stand up for a few moments. Try to keep the mind bright. So we'll chant the 5 subjects for frequent recollection, which are on page 44. These are the topics that the Buddha encouraged us to contemplate throughout our lives, very, very frequently. Are we okay with the sound? A bit closer. Oh, okay. Okay. Is that better? We'll get it perfect by the end, I'm sure. Andamayang abhinapacha vaikanapatam panamase Charadhammo mijarang anatito. I am of the nature to age. I have not gone beyond aging.
Bayati Dhammo mi bayati anatito. I am of the nature to sicken. I have not gone beyond sickness. Marana Dhammo mi maranang anatito. I am of the nature to die. I have not gone beyond dying. Sapehi me piyehi manapehi nana bhavo vinabhavo. All that is mine, beloved and pleasing, will become otherwise, will become separated from me. Kamma sakomi kamma dayato kamma yoni kamma bandhu kamma patisarano yang kammang kari sami kalayanang wa papakang wa tasadayato pavisami. I am the owner of my karma, heir to my karma, born of my karma, related to my karma, abide supported by my karma. Whatever karma I shall do, for good or for ill, of that I will be the heir. Ewang amehi abinhang pachawe kitabang. Thus we should frequently recollect. So we continue to use the breath as a focus, remembering that our aspiration is to cultivate presence, to be fully present here, now. And so this breathing is happening, it happens throughout our lives, and it's something we can attend to, we can focus on, bring our awareness to the breath. So this is what we do. Putting attention to the beginning of the in-breath, following the breath from beginning to end, noticing the point of change, and then the out-breath from beginning to end. Enjoying the process of the body breathing, just as we experience it here, now. And remembering that you can, from time to time, use a word or a short phrase to further support that awareness. Bud as we breathe in, Do as we breathe out. Or if you prefer a secular alternative, Here as we breathe in, Now as we breathe out. Or if you like, you can use those words of encouragement. May this being be well. May I be well. These simple ways of further supporting our focus, our awareness of the breath, of the body happening here, happening now. आज सुबह के सत्र का अनुवाद कर रहे हैं और जैसे अजान कहती है कि हिंदी में रेज्यूमे। तो आज सुबह हमने जो धर्म वंदना की थी, अजान ने हमारा ध्यान ये केंद्रित किया कि वो जो धर्म वंदना थी उसमें भगवान की शिक्षा का सार समाया हुआ है और ये शिक्षा धीरे धीरे धीमे धीमे करते हुए हमारे अंदर उतरती है और धीरे धीरे दुख का अंत करती है।
भगवान की शिक्षा से हमें प्रोत्साहन मिलता है अपने जो मानव अस्तित्व है उसको देखने का और उसकी सच्चाई को देखने का, जिसमें जाति, जरा, मृत्यु, दुख, व्याधि, प्रिय अप्रिय का संयोग वियोग, ये सब समाया हुआ है और ये सब हमारे दुख का कारण है। जब तक हम अपनी शरण ऐसी चीज़ों में लेंगे जो कि सांसारिक हैं या सांसारिक परिस्थितियों से बनी है, तो हमें निराशा ही हाथ लगने वाली है। और इस बात को समझते हुए भगवान ने ये जो हमारी अंतहीन एक तलाश है सुख को पाने की, दुख से मुक्त होने की, उसको उन्होंने हमारे सामने एक रास्ता दिया अपनी शिक्षा के माध्यम से। उन्होंने ये समझा कि संसार जो है वो एक अंतहीन उसमें भटकाव है, जहाँ पे जितने भी प्राणी हैं वो एक सुख की चिर अवस्था की आस में बस घूमते चले जा रहे हैं, उसमें उनका संसरण हो रहा है। तो भगवान की शिक्षा में ये बताती है कि ये संभव ही नहीं है। जिस चिर अवस्था की प्रयास में हम अंतहीन रूप में लगे हुए हैं, वो अवस्था तो संभव ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि मानो जैसे ये जो भगवान की शिक्षा है ये कोई नेगेटिव शिक्षा और ये बता रही है कि पूरा जीवन ही जो है हमारा वो दुखमय ही है। लेकिन वास्तव में सत्य है कि जो शिक्षा हमें बता रही है वो ये है कि बहुत सारी वस्तुएं हमारे सामने उपस्थित है, प्रिय और अप्रिय। गलती हम यहाँ करते हैं कि हम ये चाहते हैं, हमारी जो चाह है कि वो बनी रहे, प्रिय वस्तुएं या प्रिय अवस्था बनी रहे, ये हमारे दुख का कारण है। तो जीवन ही दुख है, ये बात नहीं है। हम वस्तुओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को एंजॉय तो कर सकते हैं, उनमें हमें सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। वी कैन एंजॉय बट नॉट रिलाई ऑन देम। और क्यों नहीं हम उन पर भरोसा कर सकते? क्योंकि उनका उद्भव होता है और वो क्षय हो जाती हैं। जो पीड़ादायक परिस्थितियां हैं उनका भी ऐसे ही उद्भव होता है और वो भी क्षय ही हो जाती हैं। तो हमें करना ये है कि हमें इस सत्य को समझना है कि किस प्रकार ये चीज़ों का उद्भव होता है और क्षय होना होता है। और जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो फिर हमारी जो चिर सुख को ढूंढने की जो एक मानसिक स्थिति बनी हुई है उससे हम बाहर निकल पाएंगे। तो हम फिर सुख इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें सुख नहीं ढूंढेंगे या सफलता में, या फिर कई बार लोग विनाश के एनाइलेशन की तरफ ही बढ़ते जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वही एक ठीक रास्ता लगता है। तो इन सब भिन्न भिन्न प्रकार की जो कामनाएं हैं उनसे बाहर निकल पाएंगे और हम समझेंगे कि इनके अंदर कोई स्थायित्व नहीं है। भगवान ने ये एनालाइज किया कि हमारे पंच उपादान खंड जो है उसकी बात जानने की कि 5 प्रकार से हम अपने तादाद में स्थापित कर लेते हैं, जैसे मैं मेरा मान लेते हैं। तो यदि हम इन खंडों के साथ अपना चिपकाव कर लेते हैं और उन्हीं से अपनी पहचान बना लेते हैं, वही हमारे एक स्ट्रगल का कारण बनता है। नित्य शब्द का अर्थ है सॉलिड, परमानेंट, यानी किसी चीज़ का स्थायित्व होना, और अनित्य है या अनित्य है जो कुछ बहता हुआ है, धारा के समान है, प्रवाह है, बदलता हुआ है। तो जो भी कुछ संसार में जितनी भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, कंडीशंस है, वो सभी अनित्य ही हैं। हम बल्कि स्वयं के बारे में भी हमारी ऐसी सोच होती है, ऐसा मानना होता है कि जैसे हम तो चिरस्थायी होंगे ही। तो हम कभी कभी ये इमेजिन करना भी बड़ा मुश्किल है कि जब मैं यहाँ नहीं था या नहीं थी तब कैसा था, मेरे जन्म से पूर्व कैसा था और मेरी मृत्यु के बाद कैसा होगा। ये इमेजिन करना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम अपने ही स्थायित्व के अंदर विश्वास रखते हैं और हम ऐसा मान लेते हैं, स्व केंद्रित जीवन होता है कि जो भी कुछ हो रहा है पूर्ण संसार जैसे मेरे ही इर्द गिर्द घूम रहा है एंड आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और उस सेंटर से फिर हम बाकी जो भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, उनको देखते हैं। तो भगवान ने इस बात को समझा कि ये जो स्थिति है ये कोई इसमें कोई संतोषजनक नहीं है और शरीर और मन के जो भी भिन्न ये जो 5 आयाम हैं ये सभी सदैव बदलते रहने की स्थिति में होते हैं। ये पंचखंड हैं, एक तो हुआ काया और फिर
विज्ञान, संज्ञा, संवेदना और संस्कार। तो हमें ये प्रोत्साहन दिया अजान ने कि हम इन पंचखंडों को इन्वेस्टिगेट करें, इन पे धर्म विचय करें और इन्हें स्व न मान लें। ये एक भी खंड ऐसा नहीं है जो आप स्वयं हैं, और ये हमारी सच्चाई नहीं है। इस बात को हम कभी कभी बुद्धि के स्तर पे तो समझ जाते हैं, लेकिन इसकी पूर्ण समझ के लिए हमें बार बार भगवान की शिक्षा को सुनना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए। और इसीलिए एक चैंटिंग के अंदर ही आता भी है कि भगवान बार बार यही एक शिक्षा दिया करते थे कि काया या रूप और नाम जो है वो अनित्य है, अनात्ता है, दुख है। तो बार बार मनन करने वाली बात है, क्योंकि भगवान की शिक्षा जो है वो उसमें धीरे धीरे करके व्यक्ति की प्रगति होती है। तो हम बार बार जब सुनेंगे तो बार बार फिर धीरे धीरे उसे अपने अंदर उतार पाएंगे। अजान ने कहा कि हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, डिस्करेज फील करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम ये सब प्रयास करते हुए भी अपने आप को बार बार जो पुराने हमारे सोच विचार के तरीके हैं उसमें फंसा हुआ पाएं, क्योंकि ऐसा होगा ही, पुराने पैटर्न्स बने हुए हैं। तो हम फिर से बार बार एक नई शुरुआत करें और जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है या सत्य को और निकटता से देखने का प्रयास करें। मुक्ति पथ जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे उस पर प्रगति होती है। और वैसे ही जैसे कि दिन में किसी एक क्षण के अंदर हम देखते हैं किसी एक क्षण में एकदम सुबह है, भोर का समय है, या काफ़ी अंधेरा है, फिर थोड़ा उजाला हुआ, फिर उजाला बढ़ता गया और अचानक बहुत सारी रोशनी। तो दिन भर में इतने प्रकार के बदलाव होते हैं और हम उनको कई बार ध्यान भी नहीं देते। तो लेकिन ये धीरे धीरे होता हुआ बदलाव है। प्राकृतिक बदलाव जो है वो इस प्रकार उसमें एक प्रोसेस है, और उसी तरह हमारी समझ भी जो है वो उसमें भी धीरे धीरे बदलाव होता है, वो भी एक प्रोसेस है। यदि हम ये देखने लगे, अपनी साधना का निरीक्षण हम दिन प्रतिदिन करने लगे, तो हमें दुखी होगा, क्योंकि हमें लगेगा अरे आज मैंने ये किया और कल तक ये मुझ में बदलाव ही नहीं हुआ। लेकिन यदि आप 2-3 वर्ष के बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तो देखेंगे कि हाँ, अपनी कुछ आदतों में, कुछ सोच विचार के तरीके में बदलाव हुआ है। तो समय लगता है और उसके लिए हमें अनुकूल परिस्थितियाँ भी चाहिए, कुछ एनकरेजमेंट भी चाहिए, कुछ हमें रोज़ का प्रयास, रोज़ की साधना भी हो, कभी कभी हम रिट्रीट्स पर भी जाएं। ये सभी जो हैं ये सहायक परिस्थितियाँ हमारे लिए उत्पन्न करती हैं। ऐसा भी ये भी सच है कि कोई व्यक्ति थोड़ी जल्दी समझ जाता है, उनकी प्रज्ञा थोड़ी जल्दी पुष्ट हो जाती है, किसी को थोड़ा अधिक समय लग जाता है। तो व्यक्ति क्या करे? व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां खुद के लिए बनाने का प्रयास करे, और समझे कि जैसे यदि आप कोई पौधे के समान है, तो जैसे एक पौधा है उसे आप ऐसा परिवेश प्रदान करते हैं कि जिससे वो सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ सके, वैसे स्वयं को भी ऐसा परिवेश प्रदान करें। उसके लिए चैंटिंग जो है, धर्म वंदना हो गई, या समय समय पे रिफ्लेक्शन करना हो गया, ये हमारी समझ को पोषण करते रहते हैं, वैसे ही जैसे किसी पौधे को पोषित किया जाता है। और धीरे धीरे करते हुए समय के साथ हम सत्य को अधिक से अधिक देख पाते हैं।